So I think 6 users we had: investors, creditors, bank, the lenders, public, government, employees, customers. Customers भी था ना? हाँ. So that is as far as the users are concerned. And the next part is related to the you can say the qualitative characteristics of the financial statement. Qualitative characteristics of the financial statement. Now, what exactly is qualitative characteristics of the financial statement? But what are the features it should contain? One of the very, very important features of the financial statement is it should be comparable. It should be, what is the meaning comparable? Yeah, ऐसा हमने पढ़ा था ना, intercompany and intra-firm and intra-firm comparisons. क्या था inter-firm and intra-firm में? You compare with the last year to this year. Then company to company in the same industry. Company to company in the same industry. तो comparable होना चाहिए. Then और क्या features होना चाहिए? Understandability होना चाहिए. What is the meaning of understandability? कि जो डेटा आप प्रेजेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूजर्स. Users with what? Any condition for the users? How the user should be? No. मालूम पड़ा आपका फादर डॉक्टर है और उनके पास मालूम पड़ा 10,000 रिलायंस का शेयर्स पड़े हुए हैं. सुन रहे कि नहीं? हाँ, तो 10,000 रिलायंस के शेयर्स पड़े हुए हैं. तो ऑब्वियसली आपके फादर के पास एनुअल रिपोर्ट आता है. Your father goes through the annual report, he understands nothing. तो क्या बोलने का, रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट खराब है. हाँ, बट उनके लिए तो कुछ भी नहीं समझा. वो तो इन्वेस्टर है, और उनके पास क्या बोलते हैं, शेयर्स भी काफी पड़े हुए हैं. ऐसा मतलब कम से कम 10-12 करोड़ के शेयर्स पड़े हुए हैं. That's on a very higher side. But he is not able to understand. वो तो बोलेंगे किस तरह का रिपोर्ट बना है, मेरे समझ में तो आ ही नहीं रहा है. Where is understandability? That's why I said any condition on the user. Yes, the user should have reasonable knowledge. The user should have. घर से आ रहे हैं आप? नहीं ना, लेकिन आपको पहले आना चाहिए, 5 मिनट पहले आना चाहिए आप. नेक्स्ट टाइम आप नहीं आओगे 5 मिनट पहले तो मैं आपको 20 मिनट बाहर रुकाऊंगा. आपके लिए स्पेसिफिक है सर. ठीक है, चलो फाइन. तो सो योर फादर कैन नॉट से अरे मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है. नहीं, then that is not the way understandability has to be understood. तो कैसा रहेगा? जो भी यूजर है उनके पास रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए ऑफ द, यू कैन से, ऑफ द इकोनॉमिक टर्म्स, ऑफ द लैंग्वेज, ऑफ अकाउंटेंसी. रीजनेबल नॉलेज नहीं है आपके पास और बोलोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, then that is not, you can say, failure of the statement. बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए आपके पास. बेसिक नॉलेज है, आप पढ़ रहे हो, कंफ्यूजिंग लग रहा है, then it is wrong. Like maybe a student who has done his commerce graduation, वो रीड कर रहा है बैलेंस शीट, ठीक है, you should at least understand asset, liability जो भी है. Maybe वो बैलेंस शीट में इंड एस रहेगा जो उसने सुना ही नहीं है, then obviously you will not understand Ind AS applications. So that is not the mistake of the company. He will not be capable of checking whether Ind AS has been followed correctly or not.
इसलिए जो बना रहा है स्टेटमेंट उसको मालूम होना चाहिए फीचर क्या है. तो ही कैनॉट मेक इट वेरी ऐसा कॉमन मैन बेस्ड. उसको जो इंडियस के लैंग्वेज है वो यूज करना ही है. आपको उतना नॉलेज होना चाहिए वो समझने का. Got my point? That is where understandability is. Then the other is what? Reliable. It should be means क्या? Whatever information is provided should be authentic, reliable, true. Like क्या बोलते हैं? I don't know now it happens or not, but that was one of the strongest features of Mukesh Ambani when he started. Now I don't know. I have not seen those things. But when he started and he took over from Dhirubhai Ambani, तो उनका ये second and third आप financial presentation देखोगे, तो he had all the numbers on fingertip. हमारा प्रोडक्शन इतना है, हमारा सेल्स इतना हुआ है, हमारा खर्चा इतना है, हमारा नेट प्रॉफिट इतना है. उनका जो कॉन्फ्रेंस था ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज का, वी हैड ऑल दोज थिंग्स. गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज वन. एंड वो चेक करेंगे, कोई जाके क्रॉस वेरीफाई कर रहा है तो मैच होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज वेयर. अभी मालूम पड़ा इधर एम्प्लॉय बेनिफिट का लिखा है, तो नोट्स तो अकाउंट में देख रहा है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट मैच हो रहा है. उसका करेस्पॉन्डिंग इंड एस 19 देख रहा है, उसके हिसाब से प्रोविजन है. और कोई तो जाके मालूम पड़ा वो बोलेगा LIC में पॉलिसी निकाला है, कोई तो जाके LIC में RTA करके पूछेगा पॉलिसी निकाला है क्या, तो LIC शुड से हाँ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज रिलायबिलिटी. लोगों को मालूम होना चाहिए, बोलेगा तो सही होगा, मिस्टेक नहीं है. मिस्टेक इज नॉट देयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज mistakes do happen with in some companies. अब मेरे ख्याल से अब भी I think some company like Transpac, if I'm not wrong, तो वहां पर उनका figures of net profits were wrong. They said profits have gone down by 43%, but it was only 23%. Then they sent a revised mail कि 43 नहीं 23 है. Sales is not down by 50, it is 20. तो एक बार के लिए ठीक है वो, but बार बार नहीं चलेगा. Because it reflects on the company, it reflects on the auditors of the company, it reflects on the chartered accountant of the company. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है. सो आप बोले ये इसका नॉलेज मुझे क्यों होना चाहिए? इसका नॉलेज इसलिए होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन यूज करने वाला है और इसमें किस तरह का चीजें पे ध्यान देना है. अंडरस्टैंडेबिलिटी पे ध्यान देना है, कंपैरेटिव पे ध्यान देना है, रिलायबिलिटी पे ध्यान देना है. That's why you know, ये चैप्टर्स कहाँ काम आता है? Wherever there is a question कि what is it, so you will refer back to this. And last time हमने मेरे ख्याल से जनरल assumptions भी बात किया था. क्या क्या assumptions का बात किया था? Going concern, हाँ, consistency, accrual. What is the meaning of going concern? क्या बोला था हमने? The enterprise will continue its operation for a foreseeable future. What is the meaning of foreseeable future? At least 4 to 5 years. Nobody is saying infinity. कम से कम 4-5 साल का तो विजन होना चाहिए. Are you clear? फिर दूसरा क्या फीचर है? Consistency. What is the meaning? The accounting policies, the treatment of the transactions, the presentations, the policies followed in this should be same year after year. हर साल सेम होना चाहिए. तो कोई बोलेगा चेंज अलाउड नहीं है क्या? है. कब अलाउड है?
One, it is required by the accounting standard. It is required by the accounting standard or it is required by law. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ बोल रहा है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है चेंज करो भाई, तो चेंज करना पड़ेगा. और इट विल लीड टू बेटर प्रेजेंटेशन. आप वॉलेंट्रीली कर रहे हैं, वॉलेंट्रीली कर रहे हैं, नहीं मुझे ज्यादा डिस्क्लोज करना है. जैसा मैंने बोला, इन्फोसिस स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेंस. वो 31 मार्च का बैलेंस शीट ही नहीं छापता था, साथ में क्या बोलता था, आने वाला साल में ऐसा होने वाला है, हमको लग रहा है ये ग्रोथ ऐसा बढ़ेगा. दैट फीचर दे स्टार्टेड, so that is appreciable. आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हो, appreciable. That is voluntary disclosures बोलते हैं. So change in policies are allowed, but these three circumstances. Are you getting my point? Hello? एंड क्यों ये जरूरी है? बिकॉज जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रहेगा, इट हैज टू बी ऑलवेज डन रिट्रोस्पेक्टिवली. व्हाट इज द मीनिंग रिट्रोस्पेक्टिव? पीछे जाके इफेक्ट ढूंढना पड़ता है. तो उससे क्या होता है? तकलीफ होता है. किस तरह का तकलीफ होता है? पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, इसलिए बोला जाके पीछे से करके आऊं. इसलिए कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करता है तो क्या करना पड़ता है? बहुत सोचना पड़ता है, अरे मैं करूं कि नहीं करूं, कौन उठाएगा तकलीफ? एएस तो फिर भी ठीक है, वो बोलते ठीक है करके एक एंट्री पे कर दो. इंडेस तो और भी गड़बड़ है, वो तो बोलते बैलेंस शीट लाइन टू लाइन चेंज कर, पीएनएल भी लाइन टू लाइन चेंज कर. इंडेस इज मोर स्ट्रिक्टर. इंडेस 8 इज वेरी वेरी क्लियर कि पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो आपको एकदम उधर जाके बैलेंस शीट का जो लाइन में चेंज है वो लाइन चेंज करो, पीएनएल का वो लाइन चेंज करो. तो इंडिया इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन वॉलेंट्री अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज. लॉ बेस्ड में इट्स नॉट स्ट्रिक्ट, बिकॉज लॉ बेस्ड में जब भी चेंज होता है तो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव में एक आध साल करो, मत करो, लीनियंसी रहता है. वॉलेंट्री में दे आर सुपर स्ट्रिक्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, क्लियर है कवरेज? नोट डाउन कर लें, फिर हम प्रॉब्लम करेंगे ऑन गोइंग कंसर्न. क्या अगर गोइंग कंसर्न है तो आपका ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनेगा? अगर नहीं है गोइंग कंसर्न तो कैसा बनेगा? नहीं है गोइंग कंसर्न तो कैसा बनना चाहिए? एवरीथिंग ऑन व्हाट? एनआरवी. एनआरवी. क्यों एनआरवी पे? क्योंकि बस बंद हो रहा है भाई, बंद हो रहा है. हम क्लोजिंग स्टॉक को कैसा वैल्यू करते हैं? नॉर्मल में. नॉर्मल में कैसा वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, क्योंकि हम बोल रहे लोअर प्रूडेंस. इधर क्या बोल रहे हैं? एनआरवी. मालूम पड़ा कॉस्ट 10,000 है, एनआरवी 12,000 है, तो आप किस पे लिखोगे? हाँ, तो ऐसा गट्स होना चाहिए. तो हम प्रॉब्लम करेंगे वैसा, टू ट्रेन आवर सेल्फ हाउ इट्स डन. एंड एग्जाम में क्वेश्चन आया है एंड पीपल वर सरप्राइज्ड, क्योंकि कोई ऐसा तैयार नहीं रहता है, उसको लगता है सब कुछ गोइंग कंसर्न है. जरूरी नहीं है. ओके, रेडी? नोट डाउन कर ले. चलो स्टार्ट करते हैं हम. पार्ट 1 लिखा है हमने? नहीं लिखा है ना? हाँ बोलिए ना. टाटा को अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है. हाँ बोलो. हाँ हाँ, टीडीएस टास्क तो है ही, इसलिए टाटा जब भी पॉलिसी चेंज करेगा तो उसको अपना सोच समझ के करना पड़ेगा. अभी लाइक फॉर एग्जांपल टाटा स्टील. टाटा स्टील इज एज ओल्ड एज, कितना साल जूना है टाटा स्टील? जमशेदजी टाटा जी ने बनाया ना, था ना अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी किधर तो था ना एक, जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा. सुना ही नहीं है तुमने? हाँ, तो कितना साल जूना है कंपनी? इट्स एज ओल्ड एज आई थिंक 118 ईयर्स. 118 ईयर्स ओल्ड है.
तो एक 118 साल जूना कंपनी, अभी उसको रिट्रोस्पेक्टिव करना है, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट गो 118 years. They will say like like as per the income tax rules, सिर्फ पिछला 8 साल का डेटा आपको रखना है, बाकी का आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो टाटा स्टील में से वी हैव 8 years record, बिफोर दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. So at least till that point you have to do. जितना तुम्हारे पास, हाँ मतलब कानूनी इनकम टैक्स तो 8 साल बोलता ही है, पर टाटा स्टील बोला नहीं मेरे पास 20 साल का है, तो 20 साल का करेगा. जितना आप ट्रेसेबल कर सकते हो उतना दूर जाना है. नहीं कर सकते, इम्प्रैक्टिकल है, बिकॉज मालूम पड़ा वायरस अटैक हो गया, ये हो गया, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट व्हाइट हैंड ने खा लिया, टर्माइट लग गया, ऐसा कुछ इम्प्रैक्टिकेबिलिटी हो गया तो उतना माफ है. बट देन दैट नोट्स टू अकाउंट हैज टू हैव दोस सब्सटैंशियल रीजंस. क्या हो गया 2000? ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नो ऐसा बेस ईयर लाइक दैट. आर वी क्लियर ऑन इट? आगे बढ़े, हेड ऑन. हेडिंग दे दो, पार्ट 1. पार्ट 1 हेडिंग components of financial statements. Part 1 heading components of financial statements. Underline next line. Sub point 1 balance sheet. Balance sheet. It portrays the values of economic resources. It portrays the values of the economic resources. The economic resources controlled by the entity. Controlled by the entity. Point number 2. Statement of profit and loss. Statement of profit and loss. It presents the results. It presents the results of the operations. Results of the operations of the entity. Operations of the entity. Third point, cash flow statement. Cash flow statement. It shows the way. It shows the way an entity generates cash. Generates cash and uses it. Generates cash and uses it. Point number 4. Heading notes, comma, other statements and explanatory materials. Other statements and explanatory materials. पेंसिल से नोट्स के ऊपर लिखो, नोट्स टू अकाउंट्स, जो आपका कॉमन है वो लिख के रखो, बिकॉज ये बहुत ब्रॉड बेस्ड है. कम से कम आपका एग्जाम तक का लिख लो. नोट्स इज नोट्स टू अकाउंट्स. अदर स्टेटमेंट में आएगा statement of changes in equity. Statement of changes in equity.
ठीक है, इधर तक तो आपका कंपलसरी है। डन। नेक्स्ट, Adam. It presents the supplementary information. It presents the supplementary information explaining different items. Supplementary information explaining different items. What is the meaning of supplementary? Additional. Supplementary, supplement. बीमार रहता है डॉक्टर देता है ना सप्लीमेंट, कमजोर है, विटामिन क्या बोलते, B12, जो भी अलग अलग है। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडिशनल। ठीक है, चलो पार्ट 2 हेडिंग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पार्ट 2 हेडिंग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Users of financial statements. Underline next line. Point number 1. Investors. Investors. Underline next line. For analysis of performance, comma, profitability, and financial position of the company, and financial position of the company. Next, second part, employees. Employees. Add on. For knowledge of stability, continuity, growth, and provisions for employee benefits. And provisions for employee benefits. Third part, suppliers and creditors. For determination of credit worthiness. For determination of credit worthiness. Credit worthiness. Determination of credit worthiness. Done? Next. Fourth part, customers. Fourth point, customers. For analysis of stability and profitability. For analysis of stability and profitability. Next, fifth one, government. Adam. For evaluation of the entity's performance. For evaluation of the entity's performance and contribution to social objectives.
and contribution to social objectives. Sixth point, lenders. Lenders. To determine whether their loans and interest when due will be paid to them. Next, point number 7. Public. For determination of the entity's contribution to local economy and public at large Next, part 3, heading fundamental accounting assumptions. Underline next line. The following assumptions are implied. When the financial statements are prepared. Subpoint A, colon, subpoint A, next line. Going concern. It is anticipated that the entity will continue its operations in foreseeable future and will not liquidate. Subpoint B, accrual. The transactions are recognized. As and when they occur. Comma, without considering the receipt/payment of cash.
the receipt slash payment of cash. Subpoint C, consistency. Consistency. Down. It means using same accounting policies. It means using same accounting policies for similar transactions. For similar transactions in all accounting periods. In all accounting periods. Done? Next line. Important note. In case the going concern concept, in case the going concern assumption, in case the going concern assumption is not valid, then the entire financial statement, is prepared on the basis of NRV. Is prepared on the basis of NRV. Done? Part 4 heading. Qualitative characteristics. Qualitative characteristics of financial statements. Point number 1, understandability. 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 Down. The information presented. The information presented in the financial statement, should be easily understandable. Should be easily understandable by users. By users with reasonable knowledge. By users with reasonable knowledge of business and economic activities. Business and economic activities. Done? Next, point number 2, relevance. Point number 2, relevance. Relevance. Financial statement should contain. Financial statement should contain relevant information. Relevant information which is likely to influence
is likely to influence the economic decisions, of the users, Next, third point, reliable. The information should be free from material error, and bias. Fourth point, comparability. The financial statement should provide both interfirm and intra-firm comparisons. Clear है इधर तक? Yes, no? Done? चलो fine. Next we'll do the questions. एक problem section में आ जाइए. Going concern वाला question करते. We'll do it on your own, means I will discuss. बाद में आपको ही करना है. We'll ask one by one. चलो problem for practice. Very good. Problem for practice. Question number 2. Problem for practice. Second question. एक काम करो, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, उसमें दोनों है शायद, तो दोनों नहीं, एक ही है. ठीक है, हम कंपैरेटिव करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में चले जाते. स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 2. नाउ व्हाट वी डू इज, अभी यहां पर तो नॉट अ गोइंग कंसर्न बोला है, बट हम क्या करते हैं, एक कॉलम ऐसा मल्टीपल कॉलम कर लेते हैं. एक कॉलम में क्या करेंगे, गोइंग कंसर्न, बाजू में नॉट गोइंग कंसर्न. तो कंपैरेटिव समझ में आएगा ना. करना है कि नहीं करने का है? नहीं तो मालूम पड़ा ये करते करते आपको लगा ऐसे ही होता है, फिर वो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा आपको. इंटरेस्टेड प्रेजेंटिंग दैट वे? ओके, सो लेट्स रीड इट. क्या दिया हुआ है, एंड आई वांट यू टू आंसर. कैसे करने वाले हम? What is the idea? Balance sheet of Anurag Trading Company as on 31st March 2011 is given below. So balance sheet is given to us 31st March 11. सीधा लास्ट लाइन देखते हैं करना क्या है. Prepare the profit and loss account for the year ended 31st March 12 by assuming it is not a going concern. हम एक काम करते हैं, पीएनएल भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं साथ में. अरे क्या हो गया, सब साथ एक साथ हो जाएगा ना. हाँ, नहीं तो बार दूसरा बैलेंस शीट के लिए क्यों करना है. पीएनएल बैलेंस शीट दोनों कर देंगे. पॉसिबल? हाँ, चलो फाइन. क्या क्या दिया है देखो बैलेंस शीट में. फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेफर्ड एक्सपेंडिचर. लायबिलिटी में कैपिटल, पीएनएल, 10% लोन, ट्रेड पेएबल.
चलो चेक करते, लाइन नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1. Remaining life of the fixed asset is 5 years with even use. The net realizable value of the fixed asset as on 31st March 2012 is 64,000. पहला गोइंग कंसर्न के हिसाब से डिस्कस करते हैं. गोइंग कंसर्न के हिसाब से करेगा तो क्या करेंगे आप? हाँ, डेप्रिसिएशन करेगा. कितना डेप्रिसिएशन करेगा? 69,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे आप. कितना आ रहा है? 13,000. बराबर है. दैट इज गोइंग कंसर्न. दोनों करना पड़ेगा ना अपने को. हाँ, नॉट गोइंग कंसर्न में आ जाइए. हाँ हाँ, तो क्या करने का? अच्छा, बैलेंस शीट में 64 आ जाएगा. पीएनएल में कितने आएगा? पीएनएल में डेप्रीसिएशन दिखेगा 5,000 का. क्यों 5,000? बैलेंस शीट में 69 है, बट वो बेचने जाएगा आज तो 64 ही मिलेगा. तो मेरे को 5,000 का क्या करना पड़ेगा? लॉस बुक करना पड़ेगा. इन व्हाट नेम विल आई बुक द लॉस? आई एम डिस्कसिंग बोथ. तो हर एक केस में दोनों जवाब देना है. अभी कर देना, मैं प्रॉब्लम करते हो मैं नहीं करने वाला हूं. मैं तो बोलेगा एक एक बोलते जाओ. जो पूछना है अभी पूछ लो. एडजस्टमेंट नंबर 2. द फर्म सेल्स एंड परचेजेस फॉर 11-12. 11 का बैलेंस शीट है, 11-12. तो अगला साल का सेल इज 5 लाख, परचेज इज 4.5 लाख. कहां आएगा? ट्रेडिंग में आएगा. दोनों में फर्क आएगा कि सेम ही आने वाला है? गोइंग कंसर्न हो या नॉन गोइंग कंसर्न हो, व्हाट विल हैपन टू परचेज सेल? सेम, नो चेंज. आगे, जनरल एक्सपेंसेस फॉर 11-12 इज, सॉरी, cost and net realizable value of stock is 34,000 and 38,000. Which stock it is? Closing stock. Going concern में कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower. तो ट्रेडिंग में एंड बैलेंस शीट एसेट में 34,000 एंड नॉन गोइंग कंसर्न में बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग दोनों में 38,000 आएगा. क्लैरिटी? नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस फॉर 11-12 इज 16,500. पीएनएल में आएगा और दोनों में सेम आएगा. Deferred expenditure is normally amortized equally over 4 years starting from 10-11, that is rupees 5,000 per year. ये बोल रहे हैं कि गोइंग कंसर्न में 5,000 आएगा. ये बोल रहे हैं नॉन गोइंग कंसर्न में 20,000 आएगा. ये लोग बोल रहे हैं 15,000 आएगा. हाँ, कितना आना चाहिए? गोइंग कंसर्न में तो 5,000 ही आएगा. नॉन गोइंग कंसर्न में 15, क्योंकि 15,000 बाकी है ना. ध्यान है कि नहीं? दे स्टार्टेड राइटिंग ऑफ फ्रॉम लास्ट ईयर, तो 5,000 लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिया रहेगा, इसलिए अपने पास 15,000 बाकी है. नेक्स्ट, वन ऑफ द डेटर वर्थ 10,000, collection of 4,000 depends on successful redesign of a certain product already supplied to the customer. इधर ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट. अच्छा, ये बोलते हैं बैलेंस शीट में गोइंग कंसर्न में 10,000 आएगा, नॉन गोइंग कंसर्न में 6,000 आएगा. मैं रुका है सबके लिए. 2 जन बोलता हाँ सर, तो 3 लोग बोलता ऐसा है. Okay, how many agree with that? And how many say that is wrong? Who has objection?
नोबडी। अरे भाई अपना डेटर कितने का है? डेटर कितने का अपना? 10,000। 10,000 का डेटर है और वो क्या बोल रहे हैं? आउट ऑफ डेटर्स वर्थ 10,000, उतना ही है। Collection of 4,000 depends on successful redesign of a certain product already supplied to the customer. What is meaning? वो 10,000 का जो डेटर है उसमें से 4,000 वाले का कस्टमर जो है वो पैसा तभी देगा जब हम उसको रीडिजाइन करके देंगे। अगर हम नॉन गोइंग कंसर्न है तो रीडिजाइन तो होगा ही नहीं। हम तो सब बंद कर रहे हैं, रीडिजाइन कहां से होएगा? तो रीडिजाइन ही नहीं होएगा तो कितना पैसा आएगा? 6,000 ही आएगा। तो 4,000 कहां जाएगा? बोलो। पीएनएल। 4,000 पीएनएल में जाएगा, 6,000 बैलेंस शीट में जाएगा। और गोइंग कंसर्न में क्या आएगा? 10,000 बैलेंस शीट में आएगा। नथिंग टू बी चेंज देयर। आई होप यू आर लिसनिंग। शुड आई रिपीट की क्लियर? हाँ बोलो। बैड डेब्स क्या हुआ? हाँ लेकिन पैसा तो गया है ना तुम्हारा, रिकवरेबल तो नहीं है ना। किसको? अरे लेकिन तुम्हारा लॉस हो गया ना। कस्टमर देने को रेडी, आपको मिलने वाला है क्या? तो आपका नुकसान हो गया ना। हाँ। तो नुकसान तो बुक करेगा। चलो नेक्स्ट। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल is 10,000 which is likely to be settled at 95%. हाँ रुका है मैं आपके लिए। हाँ चलो ये saying I'll tell. ये बोलता है गोइंग कंसर्न रहेगा तो ट्रेड पेएबल 10,000 पे रहेगा, एंड नॉन गोइंग कंसर्न रहेगा तो 9,500। क्यों? हम तो सेटल कर देगा ना। तो 9,500 में हम सेटल कर देंगे और 500 रुपए का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। प्रॉफिट हो जाएगा आपका, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो पीएनएल का क्रेडिट साइड पे आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट, देयर इज अ प्री पेनल्टी पेमेंट ऑफ 2,000 फॉर बैंक लोन आउटस्टैंडिंग। बैंक लोन आउटस्टैंडिंग में देयर इज अ प्री पेनल्टी पेमेंट ऑफ 2,000 फॉर द बैंक लोन आउटस्टैंडिंग। मतलब ये लोन जो है उसमें बोलता है प्री पेमेंट पेनल्टी है 2,000 का। तो ये बोल रहे हैं, मैं बोलेगा ये बोल रहा है गोइंग कंसर्न रहेगा तो इंटरेस्ट आएगा 4,300 का, एंड नॉन गोइंग कंसर्न रहेगा तो पेनल्टी आएगा 2,000 का। How many agree with him? One boy agrees, two boys agree, two more, one more, and how many say wrong है? हाँ इनको ऑब्जेक्शन है। ओके और एनीबडी एल्स और कुछ?
एनी अदर वे? हाँ, ही इज हैविंग डिफरेंट आंसर. हाँ, आपको आंसर क्या बोलना है वो बोलो. तो पीएनएल में 2000 आएगा. हाँ, तो 2000 पीएनएल में आएगा, गोइंग नॉन गोइंग दोनों में. ये बोले गोइंग नॉन गोइंग दोनों में पीएनएल का डेबिट होगा 2000. हाउ मेनी एग्री विथ हिम? नोबडी एग्रीज. अच्छा, हाउ मेनी से इज रॉन्ग? ओके, लेट्स कंक्लूड. कोई जवाब नहीं दे रहा है. करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर. ये प्री पेमेंट पेनल्टी 2000 हम प्रीपे कभी करने वाले हैं? जब लोन जल्दी पे करेंगे. तो जल्दी पे करने का बात कभी आएगा? नॉन गोइंग कंसर्न में आएगा. क्योंकि हम धंधा बंद कर रहे हैं तो लोन भरना पड़ेगा, तो इसलिए 2000 भरना पड़ेगा. अगर गोइंग कंसर्न है तो मैं लोन काय को भरेगा? गोइंग कंसर्न रहेगा तो लोन प्रीपे करेगा ही नहीं. कब प्रीपे करूंगा मैं? नॉन गोइंग कंसर्न रहेगा तो प्रीपे करूंगा. तो नॉन गोइंग कंसर्न रहेगा तो पीएनएल 2000 से डेबिट हो जाएगा. गोइंग कंसर्न में 2000 से डेबिट नहीं होगा. एंड दूसरा चीज, इंटरेस्ट दोनों केस में डेबिट होगा. इंटरेस्ट तो दोनों केस में भरना पड़ेगा, 4300 4300. क्योंकि ये कभी बन रहा है, कौन सा साल का पीएनएल बन रहा है? 11-12. और नॉट गोइंग कंसर्न कभी ट्रिगर हो रहा है? 31 मार्च 2012 को ट्रिगर हो रहा है, नॉट 31 मार्च 11. 31 मार्च 11 के बाद इतना सारा काम किया 11-12 में, तो लोन तो पूरा साल ही वापरा ना. अरे नॉन गोइंग कंसर्न का बात कभी आ रहा है? 31 मार्च 12 को आ रहा है. तो लोन तो वापरा ना. तो 4300 इंटरेस्ट विल कम इन बोथ द केसेस. क्या हो गया बोलो? डाउट है कुछ? क्लियर है इधर तक? हाँ बोलो. कोई भी बैंक प्रीपेमेंट का पेनल्टी क्यों चार्ज करेगा? वो लोग ने जो लोन दिया है वो सामने कोई एडजस्टमेंट करके दिया है. they would have raised funds, they would have taken bonds, डिबेंचर, जो भी फलाना डिंगला करके वो आपसे आपको लोन दे रहा है ना. तो अगर आपने प्री पे कर दिया तो उसका वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया. तो उसका वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया, वो तेरे कारण डिस्टर्ब हो गया, तो पेनल्टी लूंगा मैं. गॉट द पॉइंट? क्लैरिटी? हेलो? क्लियर? नॉट क्लियर? दैट्स हाउ वी डू इट. आगे बढ़े? फाइन. तो वी कैन मेक द पीएनएल. बैलेंस शीट बनाना डिफिकल्ट है बिकॉज ये ट्रेड पीएबल का सब अमाउंट चेंज हुआ और अपने को मालूम नहीं है. आर वी क्लियर ऑन इट? तो पीएनएल बना लेते हैं. कौन सा? 2 कॉलम, गोइंग कंसर्न एंड नॉट गोइंग कंसर्न. चलो कर दो फटाफट. तो नेक्स्ट में सब डेटा दिए हैं, देयर वी कैन डू बैलेंस शीट ऑल्सो. क्या ये वाला होमवर्क कर देंगे क्या? ये होमवर्क कर दो. क्वेश्चन 3 अभी कर लेते हैं बिकॉज उसमें बैलेंस शीट भी है. क्वेश्चन 2 मार्क कर लो होमवर्क. क्वेश्चन 2 होमवर्क. क्वेश्चन 2 होमवर्क. एंड क्वेश्चन 3 के लिए लाइन ड्रॉ कर लो. पीएनएल बैलेंस शीट वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, विल आस्क डायरेक्टली. हाँ, उतना आपको करना पड़ेगा. क्वेश्चन 3 डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा आपका. वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर एडजस्टमेंट ही है. तो आई कैन आस्क 1 by 1. दोनों करना है क्वेश्चन 3 में भी, so that you have a practice of both. हाँ बोलो. हाँ, टी फॉर्मेट में ही करना है.
इधर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे तो इन शुड बी टी फॉर्मेट में ही करता है वो। हाँ, आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगा, टेंशन मत लो, है ना। बहुत दिन के बाद ऐसा टी फॉर्मेट कर रहे हैं हम। स्टार्ट कर दो जिसका हो गया। आई एम वेटिंग सो दैट विल आस्क वन बाय वन। line by line is drawn, so we'll start asking one by one. So ready रहो। Well, I'm waiting for 2 minutes. 2 मिनट के लिए रुकता हूं मैं। But you can proceed further.
चलो स्टार्ट करते हैं. रेडी? चलो यहाँ से शुरू करते हैं. लास्ट वॉइस है. हाँ बोलिए प्लीज. कहाँ से शुरू करने वाले हैं आप? नहीं नहीं, ट्रेडिंग पीएनएल कैसा प्रेजेंट करने वाले हैं? कहाँ से शुरू होने वाला है स्टोरी, वो बोलो. स्टोरी कहाँ से शुरू होएगा ऐसा बोलते जाने का. हाँ तो क्या लिखो वो बताओ. टू परचेजेस लिखने का है बोलता है. उससे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक. बचपन ही भूल गया देखो. कितना ओपनिंग स्टॉक है? दोनों पार्टनर लोग ढूंढ रहे हैं उधर. दोनों को नहीं मिल रहे हैं. दोनों अभी भी गहराई से ढूंढ रहे हैं. 1,50,000. अरे भाई क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस शीट में है वही अगला साल का ओपनिंग स्टॉक होगा. इतना क्या रिसर्च करता है दोनों पार्टनर. हाँ चलो नेबर. टू परचेजेस. हाँ बोलो. अमाउंट भी बोलने का रहता है दोनों कॉलम. 22,50,000. बोथ कॉलम्स और वन कॉलम. 22,50,000. नेक्स्ट पर्सन नेबर. टू सेल्स. बाय सेल्स. हाँ बोलो. कॉलम 1. 27,50,000. तो नेक्स्ट पर्सन इधर. बाय क्लोजिंग स्टॉक. बोलो. गोइंग कंसर्न में 2 लाख. गोइंग कंसर्न में 2 लाख. और नॉन गोइंग कंसर्न में 2,50,000. दैट इज एनआरवी. टू एक्सपेंसेस. टू एक्सपेंसेस. बराबर. 2-3 लाइन छोड़ के लिख देते. टू एक्सपेंसेस. बोलो. 78,000 कौन सा कॉलम में आएगा? दोनों में आएगा. दोनों में 78. फिर नेक्स्ट पर्सन आगे. हाँ बोलो. टू डेप्रिसिएशन. बोलो. फर्स्ट कॉलम में 45,000. कैसे आया 45? 3,60,000 डिवाइड बाय 8 years. 45,000. सेकेंड कॉलम में 35,000. नेक्स्ट पर्सन. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. बोलो. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. That is your new RDD. न्यू RDD. कितना? गोइंग कंसर्न में कितना आएगा? गोइंग कंसर्न में आएगा 5,000. बराबर है.
गोइंग कंसर्न में 5,000, नॉट गोइंग कंसर्न में 30,000। हाँ बोलो। बैड डेब्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट वो लोग बोल रहे हैं ना कलेक्शन डिपेंड्स, इसलिए हमने लिखा है। यस, यू कैन राइट इट इधर वे, इधर लिखा है प्रोविजन गोइंग कंसर्न में, इसलिए हम लोग डाल रहे हैं। You can write it that way, but here they are making a provision, so we are saying let them make a provision all together. पिछला क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं ना प्रोविजन। हाँ, नेक्स्ट, आगे। हाँ आपका ही टर्न है। हाँ, टू डेफर्ड एक्सपेंसेस गोइंग कंसर्न 10,000, नॉट गोइंग कंसर्न में 50,000, नेक्स्ट पर्सन। बोलिए, बोलो। इधर आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज योर ट्रे सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या हो गया? नहीं ना, वो लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन का है का, वो लोग बोलते ना पेमेंट हम करेगा तो डिस्काउंट मिलने वाला है, इट इज सेटल्ड एट अ डिस्काउंट, तो वी आर गोइंग टू बैलेंस शीट में रिड्यूस्ड वैल्यू डालने वाला है ना। हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल कितना दिखाएगा? दिस विल कम ओनली इन केस ऑफ व्हाट? नॉन गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में कुछ नहीं आने वाला है, इट्स ओनली फॉर नॉन गोइंग कंसर्न। तो नॉन गोइंग कंसर्न में जाके सेटल करेगा, मैं गोइंग कंसर्न में क्यों सेटल करेगा? तो नॉन गोइंग कंसर्न में सेटल करेगा और मुझे 7,500 का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट, पेनल्टीज, पेनल्टी टू अर्ली पेमेंट पेनल्टी, बोलो। 25,000 नॉन गोइंग कंसर्न, 25,000 नॉन गोइंग कंसर्न, बराबर। नेक्स्ट पर्सन, क्या हो गया? हाँ बोल रहे हो लोग, हाँ बोलो। नहीं भाई, पहला बाकी है ना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 10%, 21,000, ब्याज तो भरेगा ना, ब्याज भर दो, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस आएगा, पहले ब्याज तो भरो। चलो, कितना आ रहा है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ रहा है वो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? दिस इज 2950, 30 lakhs,
That comes to 24 lakhs, 5 lakh 50, और इधर आएगा 6 lakhs, 6 lakhs. So by gross profit brought down 550 and 6 lakhs. बराबर. देख लो कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट. आया ब्रो ग्रॉस प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा है देखो. नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है देखो. 3 lakh 391, 368 500, 391, 368 500. तो नेक्स्ट पर्सन आगे बैलेंस शीट. कैपिटल बोलो कितना है कैपिटल. 3 lakh plus 391, 691, 3 lakh plus 368 500, 668 500. बोलो नेक्स्ट पर्सन. हाँ बोलो कुछ डाउट है उधर. हो गया इसमें. अच्छा दे सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस रखा है वो लोग ने. ठीक है वहां ऐड कर दो कोई बात नहीं. कैन ऐड इट देयर. सेपरेट रखा है वहां ऐड कर दो. नो इश्यूज. ठीक है. There is 3 lakh no. 3 lakh प्रॉफिट एंड लॉस अलग से दिया है बोल रहे हैं. तो वहां ऐड करना है कर दो. हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 514 500 प्लस 391 कितना है. सॉरी 125. हाँ नंबर्स आप लोग ही लेके आ रहे हैं ना यार. हाँ बोलो. एंड यहाँ पर 125 प्लस 368 500. कितना आ रहा है. 5 lakh 10 6 5 lakh 5 lakh 16 493 493 500. चलो नेक्स्ट पर्सन. 10% लोन गोइंग कंसर्न में 2 lakh 10
2,10,000 डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा मालूम है ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अलग से बताना पड़ेगा आपको। हाँ, सो 2,10,000 और इधर कितना भरेंगे हम, इसमें कम हो रहा है ना आपका, मतलब यू हैव टू मेक द अर्ली पेमेंट पेनल्टी इज नो, तो कितना हो जाएगा 2,10,000 प्लस 25, टोटल इतना भरना पड़ेगा ना। क्यों उतना भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा, प्री पेमेंट पेनल्टी, देन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 21,000। नेक्स्ट, हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बोलो 50,000 गोइंग कंसर्न, 50,000 कैसे आएगा, 75,000 गोइंग कंसर्न 75 एंड नॉन गोइंग कंसर्न में से डिस्काउंट, so that will become 67,500, 67,500। मिला बराबर, चलो नेक्स्ट पर्सन, फिक्स्ड एसेट्स, लायबिलिटी हो गया पूरा, नाउ फिक्स्ड एसेट्स बोलो, $360 minus 45, 3,15,000, 360 minus 35, 3,25,000। Done? Next. Again. Sundry debtors. Sundry debtors. Net of provision. बोलो 1,50,000 minus 5,000, that will come to 1,45,000 and 1,50,000 minus 30, 1,20,000। Done? Next. Next is deferred expenses. बोलो गोइंग कंसर्न में 50,000 minus 10,000, 40,000, नॉन गोइंग कंसर्न में 0। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक गोइंग कंसर्न 2 lakhs, नॉट गोइंग कंसर्न 2,50,000।
नेक्स्ट बैंक, इट्स कैश बैंक बैलेंस, बोलो कितना है? नहीं, 4,22,000 दिया है, गिवन इन एडजस्टमेंट नंबर 8। बोलो ध्यान से देख लो नंबर्स कहां से लेके आ रहे हैं। डन, देख लो आ गया टोटल। बोलिए 11 लाख 11,17,000। तो नोट डाल दो, एक एजम्पशन किया ना, कौन सा एजम्पशन किया हमने? इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं बोला वो लोग ने, तो हमने एज्यूम किया कि दे हैव नॉट पेड इट, बराबर? तो नीचे नोट डाल दो, नहीं तो somebody may assume it is already paid. Right on. We have provided interest. We have provided interest on 10% loan assuming it's not paid. Assuming it's not paid. Are you clear on it? Or no? So that is a note. I hope you got an idea of going and non-going का कैसे करना है. Clarity. So that is one of the questions. So clear रहो how to do it. Then we come to the next part of our discussion. अगले पार्ट में चले जाते हैं. चलो हेडिंग दे दो पार्ट 5. हाँ उधर एक डाउट है, जनरल डाउट है. हाँ अच्छा, इनका एक डाउट है, बहुत क्यूरियस है वो. तो ई सेइंग सर मैंने रिलायंस का बैलेंस शीट देखा, सुन रहे हैं आप? हाँ, ई सेइंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई सॉ रिलायंस बैलेंस शीट एंड इन रिलायंस बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनाया था वहां पर दे हैव रिटन एसेट फर्स्ट देन रिटन लायबिलिटीज. तो ये कौन सा शेड्यूल है? नॉर्मली शेड्यूल 3 के हिसाब से आप क्या बनाते हो? हाँ, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. याद आया क्या नहीं? वो बोलता लेकिन रिलायंस वाले ने एसेट से शुरू किया है. दैट इज अ बैलेंस शीट शेड्यूल 3 एज पर इंड एस. इंड एस का बैलेंस शीट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द एसेट साइड. दे डू द एसेट फर्स्ट देन द लायबिलिटी पार्ट. It's an Ind AS based balance sheet. Because Reliance is listed and they have a net worth of more than 250 crores. So anybody listed and having net worth of more than 250 crores have to compulsorily follow Ind AS. But then क्लियर है? तो इसलिए वो लोग का बैलेंस शीट एसेट से शुरू हो रहा है. आगे बढ़े. चलो कौन सा है नेक्स्ट पार्ट? क्या है? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका भी थोड़ा ग्लिम्स हमने लिया था लास्ट टाइम. What are the elements you will see in the financial statement? क्या क्या एलिमेंट्स नजर आता है? ऐसे अभी आपने देखा ना ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, क्या नजर आ रहा है वहां पर? इनकम,
expenses, assets, liabilities. You say income or gains, expenses or losses. So this we are saying elements. Balance sheet में कौन elements रहेगा? Assets होगा, liability होगा, income या gain, expenses या losses. So what is the meaning of that? If you understand that, then assets का definition तो already हमको मालूम है. मालूम है मतलब मैं नहीं बोलने वाला हूं. आपका फेमस डायलॉग ना मालूम है. हाँ. Controlled by the entity. Future economic benefits. Cost is reliably measurable. बराबर है? हाँ. So if you still make it more, you can say more clear on definition, then asset is defined as a resource. Defined as what? A resource. A resource which is arising out of past events. अब ये AS29 में सब ये वर्ड कॉमनली यूज होगा. Resource arising out of past event. What is the meaning of resource? Good question. Resource is what? Resource is what? Something which you have and you will earn, make money. Something which is used to make money is a resource. Something which can generate income for you. Something which can generate income for you, useful to you, help you earning is a resource. जैसे हम स्कूल में क्या पढ़ते थे? मिनरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस. What is the meaning of natural resources? Something useful to us. It may be a water, it may be you can say copper, iron, anything. That's a resource. Or crude oil is a resource. So resource is something which can be used to generate money, to earn income. इसे हम क्या बोलते हैं? Asset is a resource which is arising out of past event. मतलब ये resource है मेरे पास आज because of my past event. And what is the past event? क्या हो सकता है वो past event जिसके कारण मेरे पास आज asset है? हाँ, परचेज किया रहेगा या खुद कंस्ट्रक्ट किया रहेगा. मैंने परचेज किया होगा या तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होगा. और इट मस्ट हैव कम थ्रू अमालगमेशन, एक्विजिशन. अमालगमेशन से आया है. तो सबसे पहला रिसोर्स which is arising out of past event, controlled by the entity, having future economic benefits. Having future economic benefits which will flow to the enterprise. It will flow to the enterprise. And what is liability? Obligation. It's an obligation. Again, arising out of past event. Is creditor an obligation? Is it arising out of past event? Which event? Purchase of goods on credit. Purchase of goods on credit. Is loan taken an obligation? Yes. Is it out of past event? What is the event? We have taken loan. We have to pay it off. So loan, creditor, ये जो भी liability है, it is arising out of past event, settlement of which will lead to outflow of economic resources. जब भी ये सेटल होगा
क्या होगा? उतना रिसोर्सेस बाहर जाएगा. Why they are not using the word cash and why they are using the word resources? Because it can be for consideration other than cash. I may settle a creditor by giving him services. Can I give a service and settle the creditor? Yes. जो बुक प्रिंट करता है, जो बुक प्रिंट करते हैं, बोला मुझे बुक का पैसा चाहिए, बोलते ठीक है दे देगा. बोलते नहीं नहीं मेरा लड़का को सीए फाइनल करना है, बोले ठीक है बेच दे. बोला बिल इतना है, बोला फीस इतना है, हो गया सेटल. तो अगेन सर्विसेज प्रोवाइडेड. Got it? So that is why they are using a very broad based word. Resources will lead to outflow of economic resources. Clarity? हाँ, तो ये कॉमन वर्ड्स है, डेफिनेशंस है. एक आध वर्ड आगे पीछे किधर होगा, बट दिस इज अ जनरल बेस्ड डेफिनेशन. क्या लिखा है? Resources controlled by the enterprise as a result of past event from which future economic benefits are expected to flow to the. Done? Important word resource. अभी ये नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया हमने, रिसोर्स. रिसोर्स इज ऐसा याद रखना, रिसोर्स जिससे पैसा मिलेगा. विल अर्न मनी. What my point? Getting or no? Your father has an extra house is a resource, will generate rent out of it. समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ. Clarity? Next, liability देखो. Present obligation of the enterprise arising from the past event, the settlement of which is expected to result in an outflow of. AS 29 में सेम चीजों का बात आगे होगा. तब एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी. वर्ड में और एक वर्ड ऐड हो जाएगा. AS 29. AS 29 is on provisions, contingent liability, contingent asset. Clear है इधर तक? Got it or no? That is the meaning of it. अच्छा. Then equity. हमने सुना इक्विटी? अच्छा, उससे पहले इजी डिफाइन कर लेते. इनकम. इनकम और गेन. What will happen because of income or gain? क्या क्या हो सकता है सोचो. Then I will show you the definition. हम तो 11वीं से पढ़ रहे हैं. ये बोल रहे हैं इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम ऑपरेशंस. But the only revenue earned from operation is our income? No. It's one of the incomes. So how do you define income? इनकम से क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा, ऐसा सोचो. इनकम, मेरा पास इनकम है बहुत, आपके घर परिवार में बहुत इनकम आ रहा है, तो उस इनकम से घर परिवार में क्या परिवर्तन होगा? ज्यादा खर्चा करेंगे. पहला इनकम आया उससे परिवर्तन बोलो, गया उससे परिवर्तन नहीं पूछा मैंने. हाँ, क्या होगा? सबसे पहला बैंक बैलेंस बढ़ेगा. मतलब व्हाट इज हैपनिंग? योर फैमिली का एसेट्स आर इंक्रीजिंग. विच एसेट? Bank balance is an asset, no? Bank balance is an asset. Cash balance is an asset. So enhancement of assets. So income you are earning will lead to enhancement, increase in the value, increase in the assets of your house. Yeah, what will happen?
there will be decrease in the liability. How decrease in the liability? Pay off the loan. मालूम पड़ा आप यू आर फिनिश्ड, यू आर स्टार्टेड अकाउंटेंसी एंड आप काम करते हो, बोलते 2030 में आप बोलते हो मुझे IIM अहमदाबाद में पढ़ना है ऐसा हमारा स्टूडेंट, somebody has finished started and doing IIM अहमदाबाद MBA, ऐसा काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो बोले IIM अहमदाबाद से करेगा मैं MBA, तो IIM अहमदाबाद से करना है, तो मालूम पड़ा उसका फीस 25 लाख है, तो बोला मैं लोन लेके पढ़ेगा, तो 25 लाख का लोन लिया, पढ़ लिया, 2033 में काम शुरू कर दिया, तो स्टार्टिंग सैलरी है 40 लाख रुपया, ऐसा। हाँ, तो पैसा आया तो अपना पहला मेंटालिटी क्या रहता है, लोन पे ऑफ कर दो यार, अपन थोड़ी मुकेश अंबानी है, लोन है तो बोला और लोन लाओ है, उतना तो अपना थिंकिंग लेवल नहीं है, अपना थिंकिंग लेवल है तो छोटू छोटू है। नॉर्मल कॉमन मैन थिंग्स लाइक दैट, नो, ही अर्न्स, pay off the loan. Only people on a very, very bigger scale, they earn more, take more loan. They say, we want to grow 10 times. Got my point? So what will happen when you earn that 40 lakhs, your father will say, first pay off the loan. Getting my point? So decrease in liabilities. Clarity? Got the point? Fine. तो इनकम को पहला हम देख लेंगे, then we'll come to the next part. क्या लिखा है? Increase in the economic benefit during the accounting period in the form of inflows or enhancement of assets, or decrease in the liability that will result in increase in the equity other than those relating to contributions from the equity participants. उतना आगे मत जाओ, पहला उतना बात समझ लो क्या हो रहा है। अर्न करेंगे तो पहला नॉर्मल, आप कुछ नहीं कर रहे, मैंने क्या बोला, कुछ नहीं कर रहे, कैश बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कुछ नहीं किया आपने। अभी आप बोलते नहीं नहीं मैं खुद फाइनेंस का चैंपियन है, मैं तो पहला जाके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, तो क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज इन एसेट्स, सुन रहे। और पापा से नहीं नहीं भाई तेरा 25 लाख का लोन है, लोन पे ऑफ कर दे, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। दिस इज योर पर्सनल। अब बिजनेस में प्रॉफिट आ गया, वो प्रॉफिट कहां जाके बैठता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड वेयर इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ रहा है, शेयर होल्डर्स का फंड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। एंड शेयर होल्डर का फंड कैसे बढ़ सकता है, या तो रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ा, या तो हमने उनको बोला फ्रेश इशू, पैसा ला भाई। तो इधर किसके कारण बढ़ रहा है, प्रॉफिट के कारण। सो इट इज इंक्रीजिंग फॉर रीजंस अदर देन कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम देम। विदाउट टेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम देम, वो लोग का इक्विटी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। विदाउट टेकिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम देम, आई एम इंक्रीजिंग देयर वैल्यू। इसलिए क्या वर्ड है, रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। इक्विटी बढ़ रहा है, क्यों इक्विटी बढ़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया, तो किस पे फर्क पड़ा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ गया तो इक्विटी बढ़ गया। तो क्या लिखा है, इंक्रीज इन इक्विटी फॉर व्हाट, अदर देन दोज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब उनसे पैसा लिए बिना हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं। हेलो, ये कहां काम आएगा, जैसे मैंने बोला आप चार्टर्ड है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नया बिजनेस कोई स्टार्ट कर रहा है, और आपको आके बोलता है सर मेरा फाइनल अकाउंट्स बना के दो। उसमें आपको डिसाइड करना है
इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, ये कैपिटलाइज होगा, ये डेफर्ड में जाएगा, क्या होगा, हर एक छोटा छोटा चीज में फिर आपको डेफिनेशन चेक करना पड़ता है. गॉट माय पॉइंट. अभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डिफाइन करो. एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट, स्मार्ट रहेगा तो इधर ही हो जाएगा. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के कारण क्या होगा? डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, आउटफ्लो और डिक्रीज assets or increase in liability, decrease in the equity, other leading to contributions, or you say payments. How do you pay them? Dividend. Dividend. वो तो डिविडेंड दिया नहीं, फिर भी क्या हो रहा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो रहा है. डिविडेंड दिए बिना रिजर्व्स एंड सरप्लस कम क्यों होगा? लॉस हो गया. ध्यान है? कंफ्यूजन है? अच्छा, लास्ट वन क्या लिखा है? इसका मीनिंग आई वांट फ्रॉम यू. रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटी. बचपन में ही पढ़ा था हमने, 11वीं में ही पढ़ा था. क्या पढ़ा था? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस. बच गया, बचा हुआ चीज है, इसलिए क्या वर्ड है? रेसिडुअल. इट्स अ लेफ्ट आउट, एंड लेफ्ट आउट है इसलिए इक्विटी इज ऑलवेज कॉल्ड एज रेसिडुअल वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू जैसा है. डन. दैट फिनिशेस द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इट. क्लियर ऑन इट? नोट डाउन कर ले. चलो पार्ट 5 हेडिंग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. AS29 में यूज होगा ये सब, तभी मैं नहीं बोलेगा ना, मैं लिखाएगा, मैं स्ट्रेट बोलेगा फ्रेमवर्क देखो. Write down. Point number 1, heading assets. Write down. Resources controlled by the enterprise resources controlled by the enterprise arising from past events, arising from past events, comma, from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. Underline the word resource, underline the word controlled, underline the word past events, underline the word future economic benefits. ये keywords है. Next, point number 2. Liabilities. Add on. Present obligations of the entity, arising from past events, comma, the settlement of which
the settlement of which is expected to result, which is expected to result in outflow of economic resources, outflow of economic resources. Underline the word present obligation, past events, settlement, outflow. Done? Third point, equity. कभी भी ना इसमें एग्जाम्पल लेके देखने का, कभी भी जैसा मैंने बोला क्रेडिटर, आपको समझ के दिमाग में बिठाने तो कैसे सोचने का, क्रेडिटर है वो मेरा कभी का ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्या पास्ट का ऑब्लिगेशन है? पास्ट का ऑब्लिगेशन है तो अभी काय को भर रहा है? तुम कॉमेडी करते हैं बीच में यार। अरे क्रेडिटर है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, क्यों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? पैसा देने का है। हाँ, यू ट्रांसलेटेड दैट वे, नहीं तो ये कभी भी मीनिंग नहीं मालूम पड़ेगा आपको। क्रेडिटर है, इज इट माई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? वाई? I have to pay now. I have to pay now. Why? I would have purchased goods in the past. And what is the past event? Purchase of goods on credit. तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, क्रेडिटर है, चलो व्हाट इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? पैसा देना है। पास्ट इवेंट क्या है? गुड्स खरीदा है उधारी में, सेटल करूंगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक फ्लो, इकोनॉमिक आउटफ्लो होएगा। मीन्स व्हाट? पैसा जाएगा या सर्विस जाएगा या शेयर्स जाएगा। ऐसा आपको अपना थिंकिंग को ब्रॉडन करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेके उसका बनाने का, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो आप कोई भी वर्ड मिस नहीं करोगे। नहीं तो आपके लिए एक आध वर्ड डिलीट भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ना है। ऑब्लिगेशन डिलीट हो गया तो क्या है? प्रेजेंट वर्ड नहीं है, हाँ ठीक है ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। तो इंपॉर्टेंट, आर वी क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? That's why you should understand those words. Either be many word people don't understand. Residual. Why it's residual? Left out. Residual is left out. बचा हुआ। Got it? ऐसा हर एक को सिंप्लीफाई करो। That on. Third point, equity. लिखो। It is the residual interest. It is the residual interest in the assets of an enterprise after deducting all its liabilities. Got it? पेंसिल से लिख देने का अपना बचपन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बचपन का? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। उसको ही थोड़ा पॉलिश करके प्रेजेंट किया बस। पॉलिश हो गया तो अपन वैसे डर जाते हैं। वो आपको पॉलिश इसलिए सिखा रहा है डराने के लिए, डरने के लिए नहीं। इधर उल्टा हो रहा है, आप ही डर जाते हैं। डराने का बात तो दूर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इनकम स्लैश गेन। इनकम स्लैश गेन एड ऑन, it is increase in economic benefits. It is increase in economic benefits during the accounting period
during the accounting period in the form of inflows. Underline the word inflows, or enhancement of assets, और एनहांसमेंट ऑफ एसेट्स. तो तीन तरीके से हो सकता है, इनफ्लो और एनहांसमेंट ऑफ एसेट्स. अंडरलाइन द वर्ड एनहांसमेंट, अंडरलाइन द वर्ड एसेट्स. और डिक्रीज or decreases in liability, decreases in liability that results in increase in equity, that results in increase in equity other than those relating to contributions from equity participants, contributions from equity participants. Underline the word increase in equity and pencil से लिख के रखो. What is the meaning of increase in equity? Reserves and surplus. Reserves and surplus. Got it? Next, point number 5. Heading expenses slash losses. इसका exact उल्टा है. Write down. It is decrease in economic benefits. Exact उल्टा है. It is decrease in economic benefits. During the accounting period in the form of outflows, or depletion of assets, or incurrence of liabilities, that result in decrease in equity, other than those relating to distributions to equity participants. What is the meaning of distributions to equity participant? Dividend. बायबैक करेंगे, वो भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है. यस, समवॉट एक्सटेंट. आर वी क्लियर ऑन इट? प्रॉपर. चलो, सो दैट इज योर पॉइंट नंबर 5. क्लियर है? एलिमेंट्स क्लियर है क्या?
Proper? Any doubt? Fine. Part 5, the second last part. Part 6. Total 7 parts, the 6th one. Okay, what is the next one? Measurements of elements in financial statement. What are the different measurement basis you have? क्या क्या तरीके से हम मेजर करते हैं अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को? हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो बोल रहे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हम. हाँ, प्रेजेंट वैल्यू पे करते हम. हाँ, फेयर वैल्यू पे करते हम. हाँ, एनआरवी पे करते हैं. एनआरवी दैट इज योर रियलाइजेबल वैल्यू पे करते हम. सुना है? ऐसा नहीं सुना है? सुना है आपने? व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. गुड गुड. हिस्टोरिकल कॉस्ट फर्स्ट वन क्या है? एक्विजिशन प्राइस, वॉट एवर प्राइस यू आर परचेजिंग इट. देन current cost. What is the meaning of current cost? You will present your assets and liability at what? आज के तारीख में एसेट खरीदा होता तो क्या प्राइस होता, या आज के तारीख में लायबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा तो कितना भरना पड़ेगा? दैट्स अ करेंट कॉस्ट. मतलब आज के तारीख में, मतलब इफ आई वुड हैव परचेज द एसेट टुडे, if I would have purchased the asset today, what is the value? If I would have taken the loan today, what is the value? Creation of that asset, creation of that liability at that point. Creation of the asset and creation of the liability at that point. What is the meaning of present value then? प्रेजेंट वैल्यू में क्या आना चाहिए? डिस्काउंटिंग फैक्टर. मतलब क्या करेंगे हम? एसेट का बात करते हैं. ये बोल रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे. और लायबिलिटीज में क्या करेंगे? हाँ, ओके. और हाँ, तो इंटरेस्ट बोल रहे हैं, और क्या है? प्रिंसिपल 5 साल के बाद में भरने वाला हूं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है? मालूम पड़ा 5 साल के बाद 10 लाख रुपया देने वाला है, तो आज के तारीख में उसका क्या वैल्यू है? आज के तारीख में क्या वैल्यू है? सुन रहे हैं क्या आप? ऑल दोज आर प्रेजेंट वैल्यूज. देन यू हैव द रियलाइजेबल वैल्यू. व्हाट इज रियलाइजेबल वैल्यू देन? डिस्पोजल. डिस्पोजल. एसेट रहेगा तो क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं. लायबिलिटी रहेगा तो क्या कर रहे हैं? सेटलमेंट कर रहे हैं. जैसे अभी नॉन गोइंग कंसर्न में था ना, लाइक क्रेडिटर्स, उसको पे कर रहा है तो कितना 10% डिस्काउंट देने को रेडी है. Got it? So that is the meaning of it. So what is current cost? Assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that would have to be paid off. That would have to be paid off if the asset is acquired currently. अभी का अभी पैसा दे के लेना है तो how much I would have taken? अच्छा, थोड़ा आगे पीछे हो गए. Liability के केस में क्या है? Amount that would be रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन करेंटली. आज जो है लायबिलिटी क्रिएट करना है मुझे, तो क्या प्राइस पे होगा? गॉट द पॉइंट? देन रियलाइजेबल सेटलमेंट. एसेट रहेगा तो करेंटली रियलाइजेबल ऑन सेल ऑफ द एसेट. एसेट को बेचा मैंने तो आज के तारीख में कितना मिलेगा?
What is that amount I will realize out of it? Liability रहेगा तो कितना सेटल करके मिलेगा मुझे? Are you clear? And present value के केसेस पे क्या आएगा? डिस्काउंटिंग. एसेट के केस पे क्या डिस्काउंट करेंगे हम? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. लायबिलिटी के केस में क्या डिस्काउंट करेंगे? आउटफ्लो. क्या क्या आउटफ्लो हो सकता है? इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रीपेमेंट. ये 4 तरीका है. डन. So what are the measurements? Historic, current cost, realizable or settlement, present value. तो आपका पूरा पूरा सिलेबस इंड एस जो भी लेवल पे, एनडीएस में चलो फेयर वैल्यू मेजरमेंट भी है, बट अदरवाइज इफ सब कॉन्सेप्ट आपका इसी पे चलेगा. क्लियर ऑन इट? डन. नोट डाउन कर ले. डाउन. हेडिंग पार्ट 6, measurement of elements in financial statement. Measurement of elements in financial statement. Number 1, historical cost. Write down. It is the acquisition price. It is the acquisition price. Second point, current cost. Write down. In case of assets, it is the carrying value. It is the carrying value at the amount of cash, at the amount of cash or cash equivalent, cash or cash equivalent that would have to be paid, that would have to be paid for the same or a similar asset, for the same or similar asset if acquired currently, if acquired currently. Done. Next line. Similarly, same point, next line. Similarly, in case of liability, in case of liability, it is the amount that would be required, is the amount that would be required to settle the obligation, that would be required to settle the obligation currently. Next, third point, realizable value bracket settlement value, realizable value bracket settlement value. Add on. For assets,
For assets, it is the amount currently realizable. For assets, it is the amount currently realizable on sale of the asset, on sale of the asset in an orderly manner, on sale of the asset in an orderly manner. Underline the word orderly manner. What is the meaning of orderly manner? Orderly manner is in the normal course. No distress. कभी कभी डिस्ट्रेस में बेच देते हैं ना. व्हाट इज मीनिंग डिस्ट्रेस में बेचा? एकदम डेस्परेट है, अभी अपने पास फंड्स नहीं है, फंड्स का शॉर्टेज है, या कुछ प्रॉब्लम हो गया, या बैंक ने जबरदस्ती आपसे बिकवा दिया, तो क्या हो रहा है? एसेट का नॉर्मल वैल्यू मिलेगा क्या कम वैल्यू मिलेगा? इसलिए लिखा ऑर्डरली डिस्पोजल, मतलब नॉर्मल कोर्स में बेचा हमने. फर्क है दोनों में. नेक्स्ट लाइन में लिखो सेम पॉइंट. फॉर लायबिलिटीज this is the undiscounted amount. This is the undiscounted amount expected to be paid. Undiscounted amount expected to be paid on settlement of the liability, on settlement of the liability in the normal course of the business, in the normal course of business, in the normal course of business. Full stop. Next, point number 4. Present value. Present value. Add on. In this case, the assets are carried. This case, the assets are carried at present value. At present value of future net cash inflows. Of future net cash inflows generated by the asset. Generated by the asset in the normal course of business. Done. Next line, same point, next line. Liabilities are carried. Liabilities are carried at present value of, are carried at present value of future net cash outflows. Of future net cash outflows that are expected to be required. That are expected to be required to settle the liability. To settle the liability in the normal course of business. In the normal course of business. Normal course of business. Are we clear on it? Done? Finished? Okay. So that is a 6th part. Clear on it? Fine.
The last concept that will end the chapter. Part number 7. Now, on this, they do ask questions, but it's very typical silly type. But exam में आया हुआ है. What is the next one? Financial capital maintenance. अब इसमें जरा ध्यान से सुन लेना. मैं न्यूमेरिकल से समझा रहा हूं, बिकॉज थोड़ा ट्रिकी है एंड ये बहुत क्या बोलते हैं ना, इट इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ व्हेनेवर यू कैन से लिटिगेशंस आर देयर. जहां भी डिस्टर्बेंस हो गया, तकलीफ हो गया, क्राइसिस हो गया, ये सब चीजों को देखना पड़ता है. सुना आपने? तो इसलिए कॉमनली लोग सुनते नहीं है, ये रेयर चीजें हैं. अब सुन लो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल सो दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस? Now here, now they are saying financial capital maintenance, definition सुन लेना, that is the amount of capital required, amount of capital required to maintain the same assets as at the opening of the period. मतलब, to make it simpler at your level, इंटर लेवल, मेरा स्टार्टिंग में जितना यूनिट था, जितना यूनिट ऑफ स्टॉक था, ये बेसिक एग्जांपल है, बाद में इसको बहुत हायर लेवल पे डेवलप करते हैं, अभी अपन बेसिक लेवल पे रखते हैं. तो मेरे पास 1 अप्रैल में जितना यूनिट्स ऑफ स्टॉक था, समझा, 1000 यूनिट ऑफ स्टॉक था मेरे पास, तो लोग बोल रहे हैं यू शुड हैव दैट मच कैपिटल विथ यू एट द क्लोजिंग सो दैट यू आर एबल टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ स्टॉक, मेंटेन दैट लेवल ऑफ स्टॉक. लाइक अगर मेरे पास, जैसा मैंने बोला, 1000 यूनिट है मेरे पास 1 अप्रैल 23 को, तो बोल रहे हैं 31 मार्च 24 में यू शुड हैव दैट मच फंड्स with which you will be able to maintain the same level of stock as it was on 1st April 23. समझो, ये स्टॉक का प्राइस है 20 रुपया, 20 रुपए का मेरा स्टॉक था, तो बोल रहे 31 मार्च में आपके पास कम से कम 20,000 रुपया तो रहना चाहिए, so that you are able to have 1000 unit. This is assuming price is constant, कि 20 रुपया का माल था, आज भी 20 रुपया ही है, तो मेरे पास 1000 माल पड़ा था ओपनिंग में, तो मेरे पास क्लोजिंग में भी 1000 यूनिट ही खरीदने के लिए मेरे पास 20,000 रुपया रहेगा, तो बस हो गया. दैट्स ए सिंपलेस्ट लॉजिक. गॉट इट? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं. ये माल मैंने बेच दिया, सोल्ड 1000 यूनिट at ₹25. सोल्ड, तो मेरे पास कितना कैश बैलेंस है? कितना कैश बैलेंस है? 25,000. अरे 25 इंटू 1000 ना, 25,000 है ना 31 मार्च को. तो डू आई हैव इनफ ऑफ कैश बैलेंस? यस, आई नॉट ओनली हैव इनफ कैश बैलेंस, I also have surplus 5,000 रुपया which I can withdraw in the form of drawings in this case. लेकिन मालूम पड़ा 25,000 था, मैं घर में लेके चला गया 15,000 रुपया.
तो अभी मेरे पास कितना है, तो मतलब शॉर्टेज है, कितने का शॉर्टेज है, 10,000 का, क्योंकि जरूरत कितने का है, 20, और मेरे पास है कितना, 10। डन, समझ गया, क्लियर है। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम 20,000 क्या हिसाब से बोल रहे हैं, प्राइस रिमेन्स द सेम, बट ऐसा होना जरूरी। हाँ, तो दिस इज वन मेथड which is where you are assuming the prices are same. This is called physical capital maintenance at historical cost. At which cost? ये हो गया एक बात। सपोज यू से नहीं नहीं, हम तो करेंट प्राइस पे करेंगे। किस पे करेंगे, समझो, आई से द प्राइस एट 31st मार्च, सपोज ये सब स्टोरी खत्म करते हैं, ऑन 31st मार्च मेरा जो स्टॉक है उसका वैल्यू हो गया 22 रुपया, तो then I will require 22,000. I will require 22,000. That is the meaning of it. Now, ये जो 22 रुपया आया है हमारे पास, suppose it is based on the price index. What is the price index? हमने बचपन में पढ़ा था. Suppose the price index was 110. What is the meaning? अच्छा, प्राइस इंडेक्स के हिसाब से 22 रुपया बराबर है क्या? हाँ, क्यों बोल रहे बराबर है? 10% हो गया ना, तो 20 का 10% 22 रुपया, तो 22 रुपया 22,000 रुपया चाहिए। इसमें क्या वीकनेस है, ये मेथड में क्या वीकनेस है? वो मेथड में तो आपने बोला वी आर एज्यूमिंग कॉस्ट इज सेम, ये मेथड में क्या वीकनेस है? सपोज आई एम यूजिंग द प्राइस इंडेक्स एंड डिटरमाइनिंग 22 रुपया, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या वीकनेस लग रहा है आपको? प्राइस बढ़ रहा है, वीकनेस है? What is the problem in using the price index to determine this 22,000 रुपया? जो लोग भी पढ़ा रहेगा मेरे ख्याल से 11th 12th फाउंडेशन, हाँ, एबनॉर्मल है। नहीं नहीं, इंडेक्स नंबर का बेसिक एजम्पशन ही है कि बेस ईयर हैज टू बी नॉर्मल ईयर, उतना तो पढ़ा ना भाई, हाँ। चलो, मुझे सुनना है कि भाई ये प्राइस इंडेक्स 110 मिला, उसके बेसिस से बोलता है 10% बढ़ा 22 रुपया। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द वीकनेस ऑफ दिस मेथड। जैसे पिछला इसमें आपने बोला, आपने बोला ना पिछला इसमें क्या बोला आपने, वी आर एज्यूमिंग प्राइस इज सेम, अब इसमें बता दो भाई। हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं, नहीं ना, ये जब भी हमने शुरू किया तभी इंडेक्स नंबर 100 का था, अभी ये 31 मार्च को 110 का प्राइस इंडेक्स है। और आपको 22,000 रुपए तो 1 अप्रैल को ही चाहिए, बिकॉज यू वांट टू मेंटेन स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 24, नॉट 25। हाँ बोलिए, वीकनेस, problem with price index numbers is it is usually based on a basket of products. What is the meaning of basket of products? प्राइस इंडेक्स का आता कैसे, बहुत सारा प्रोडक्ट्स का प्राइस लेके हम क्वांटिटी लेके वेटेड एवरेज करते हैं, नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो प्राइस इंडेक्स मालूम पड़ा 10% से बढ़ गया, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट था उसका 10% भाव प्राइस नहीं बढ़ा है, 20% बढ़ गया है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा हुआ है ना, गवर्नमेंट अनाउंसेस इन्फ्लेशन, देखते ही नहीं आप,
इन्फ्लेशन अनाउंस करता है गवर्नमेंट, वो मालूम है क्या? हाँ, तो आरबीआई का पॉलिसी के टाइम दे अनाउंस कि अभी ये लास्ट 3 महीने में इन्फ्लेशन था 8%। तो आपके घर में अगर डिस्कशन होता है और आप सुनते हैं और आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो लोग बोलते अरे 8% कहां था, हम तो इन्फ्लेशन 15% महसूस किया। नहीं समझा? वो लोग ने इन्फ्लेशन कैसा निकाला? आपका घर वाले ने। वो लोग बोल रहे अरे हमारा लास्ट महीने तक 10,000 खर्चा होता था। हाँ हाँ, खर्चा बढ़ गया। वो तो 10,000 करता था, अभी 20,000 15,000 हो गया या 12,000 हो गया, 20% हो गया। और गवर्नमेंट बोल रहा है 8%। 8% के हिसाब से तो 800 बनना मांगता था, हमारा तो खर्चा 10 का 12 हो गया। तो क्यों मैच नहीं हो रहा है गवर्नमेंट और आपका? मालूम पड़ा गवर्नमेंट का जो बास्केट है और आपका जो बास्केट है वो मैच ही नहीं हो रहा है। हो सकता है ना? या गवर्नमेंट जो क्वांटिटी सोच रहा है और हम जो क्वांटिटी सोच रहे हैं वो दोनों अलग है। Got it or no? Yeah. So possible, no? The basket followed by government, out of 20 item which government is taking, I am only using 5, I am only using 6. You say, nahin, every Saturday, Sunday, every Sunday we have a movie program. ऐसे समझो ना, फैमिली बोलता है हर संडे को मूवी प्रोग्राम है हमारा। गवर्नमेंट बोलता है वो मूवी प्रोग्राम का हम इंडेक्स में नहीं लेते, वो लग्जरी में आ गया। आप बोलते काय का लग्जरी, नेसेसिटी है। ऐसा कैसा बाहर नहीं जाएगा, फ्रेश होएगा कि नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए कि नहीं, तो आप ऐसा क्लेम करते हैं। वो बोलता नहीं नहीं वो सब अलाउड ही नहीं है, मतलब वो हमारा बास्केट में है ही नहीं। फॉलोइंग? तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम विल अराइज। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपका जो कमोडिटी है उसका अलग अलग निकालना पड़ेगा, बट वो क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो 3 मेथड है, 1 हिस्टोरिकल, थर्ड सेकेंड इज इंडेक्स जो एवरेज पे है, तीसरा इंडिविजुअल आइटम्स, प्राइस इज इंडिविजुअल बेस्ड। But everywhere the objective is what? The conclusion is what? We should have that much funds to maintain the same quantity of stock which you had at the start of the year. Bottom line वही है सब जगह पर। प्रॉपर क्लियर है? पहला हम क्वेश्चन करेंगे फिर थियरी लिखेंगे, है ना? चलेगा ना? तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा ना कि कैसा वर्क हो रहा है। इसके लिए बोल रहा हूं, 5 मिनट का ही काम रहता है, हार्डली टेक 5 मिनट्स। करना है नहीं करना है, कर दो तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइटिंग यू विल डू आफ्टर द ब्रेक, आई नो योर ब्रेक टाइम इज देयर। हाँ, आई एम कॉन्शियस ऑफ दैट। हाँ, क्वेश्चन नंबर, सिर्फ क्वेश्चन वहां से रीड करना है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 आप रीड करोगे। एक मिनट, आई जस्ट गिव यू, सॉरी क्वेश्चन 3, थर्ड वन रीड कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्लास वर्क क्वेश्चन 3, क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 3 हम ओरली डिस्कस करेंगे, देन आई विल शो यू द सॉल्यूशन। पहले ओरली डिस्कस करते हैं क्लास वर्क क्वेश्चन 3, पर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि करना कैसा है। बहुत इजी रहता है बट नाम डरावना रहता है बस। देख लो क्या लिखा है, कम ऑन लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या लिखा है? A trader commenced business on 1st April to 1st Jan 2011 with 12,000 rupees represented by 6,000 units of a certain product at rupees 2 per unit. तो कितना यूनिट है स्टार्टिंग में? हाँ, वो इंपॉर्टेंट है। तो एंड में भी कितना यूनिट होना चाहिए? 6,000 यूनिट होना चाहिए। एग्री विद दिस? नेक्स्ट, during the year 2011 he sold
these units at rupees 3 per unit and had withdrawn 6,000 rupees. तो कितना पैसा बाकी है एंड में उसके पास? बोलो 12,000. कैसा 12,000? 6,000 इंटू 3, 18,000 का माल बेच दिया, 6,000 विड्रॉ कर दिया, तो अभी उसके पास पड़ा कितना है? 12,000 पड़ा है. एग्री? ये क्लियर है क्या? नाउ स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स एप्लीकेबल इज 125, वो बाद में देखते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैपिटल मेंटेनेंस अंडर द 3 बेसिस. फर्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करना है, तो 1 मिनट जरा ध्यान से सुन लेना. हिस्टोरिकल कॉस्ट. हाउ मच इज अ क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आई हैव? क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कितना? क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस फटाफट बोलो. एंड हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड? कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है? हाँ, कैसा? 12,000. 6,000 इंटू 2. एंड डू यू हैव एनी सरप्लस, एनी डेफिसिट? नथिंग. कौन सा मेथड हो गया? हिस्टोरिकल. क्लैरिटी? दूसरा, करेंट परचेजिंग पावर. करेंट परचेजिंग पावर एंड परचेजिंग पावर का इंडेक्स क्या है? 125. तो आपका 2 रुपए का प्रोडक्ट 125 मतलब 25% बढ़ गया. 2.5 15,000. अरे 2.5 ना? हाँ तो बोलो आपके हाथ में कितना पैसा? हाउ मच यू हैव इन योर हैंड? एंड हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड? कैपिटल रिक्वायर्ड बोलो 6,000 इंटू 2.5, 15,000 चाहिए. तो क्या हो रहा है? 3,000 का क्या है? डेफिसिट. 3,000 का डेफिसिट. नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान है? नेक्स्ट, थर्ड केस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस when the price per unit at the end of the year is 2.7. फिजिकल कैपिटल मतलब वो प्रोडक्ट का एग्जैक्ट वैल्यू निकाला. व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट? 2.7. तो मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपके पास? वो तो सेम ही है, बट कितना फंड्स रिक्वायर्ड है आपको? कैसा आया? 6,000 इंटू 2.7 कितना आ रहा है? तो कितना का शॉर्टफॉल है? 4,200. आर यू क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? हेलो? मतलब इसके हिसाब से आपके पास सिर्फ 12,000 है, तो आप कितना यूनिट परचेज कर सकते हो मैक्सिमम? 12,000 डिवाइड बाय 2.5. मैक्सिमम यू कुड हैव परचेज्ड हाउ मच? 4,000. और इधर 12,000 रुपया ही है. 2.7 के हिसाब से हाउ मच यू कुड हैव परचेज? 4,444. दैट्स व्हाई शॉर्टफॉल है दोनों जगह पे. समझ में आ रहा है क्या लॉजिकल? अब देखो कैसा प्रेजेंट किया है. क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 6,000 इंटू 3 18,000 माइनस 6,000, तो 12,000 रुपया है मेरे पास. लेस कैपिटल टू बी मेंटेन्ड. कितना कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा मुझे? ओपनिंग कैपिटल का हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से 12,000 चाहिए मेरे को, और मेरे पास 12,000 है, तो नाइदर शॉर्टफॉल नॉर डेफिसिट है. क्लियर है? सेकेंड केस देख लो. करेंट परचेजिंग प्राइस. क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास 6,000 इंटू 3 माइनस 6,000, 12,000 है. कैपिटल टू बी मेंटेन्ड, तो ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से 6,000 यूनिट है, भाव बढ़ गया तो 15,000 रुपया चाहिए, बट है 12, तो कितने का शॉर्टफॉल है? 3,000. फॉलोइंग ऑल ऑफ यू? एंड द लास्ट केस, क्लोजिंग कैपिटल वापस मेरे पास 12,000 ही है, ये लिखने का जरूरत नहीं, 12,000 ही है. लेस कैपिटल टू बी मेंटेन्ड. ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से 6,000 इंटू 2.7 16,200 है, एंड मेरे पास 12,000 है, तो शॉर्टफॉल कितने का हो गया? 4,200. आर यू क्लियर ऑन इट? प्रॉपर? हेलो? डन? आइडिया आया क्या आपको?
बस उतना ही करना है। क्लैरिटी? थियरी हम बाद में लिखते हैं। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट समझा क्या आपको? वो कितना पैसा क्लोजिंग में और कितना चाहिए? ज्यादा है तो सरप्लस है, कम है शॉर्टफॉल है, इक्वल है तो जीरो। ओके, चलो फाइन, थैंक यू, हैव योर ब्रेक, देन विल मीट।